बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताना चाहूंगा, जिसके बेसिस पे काम हो रहा है, कि आधार एक फाउंडेशनल आइडेंटिटी है। आधार होने से आपको सर्विस के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं मिल गई है। दूसरा, आप सिटीजन भी नहीं, ये रेजिडेंट को दिया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दर्शकों को भी पता होना चाहिए कि आधार रेजिडेंट को दिया जाता है। और रेजिडेंट की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इफ एनीवन हु इज रिजाइडिंग इन आवर कंट्री more than 182 days at the date of enrollment, उसको रेजिडेंट बोलते हैं। जब आधार आ गया, आइडेंटिटी सबको मिल गई, तो अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना 50 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स खोले गए अभी तक। और फाइनेंशियल सिस्टम में लोग आए। उससे क्या हुआ कि जब सबके पास बैंक अकाउंट अब हो गया, तो अभी आप जो देखते होंगे हर छोटी छोटी दुकान पे QR कोड लगा रहता है। Correct. In the digital environment, what you require? Trust. Right. So this blockchain is helping to, enable the trust between the entities. Because in a digital space, when we are talking about the metaverse, etc., avatars, so one important thing is trust. Without trust, you can't transact and you can't go ahead. So here, the new technology will play a very important role. Hello, you're watching The Mainstream, formerly known as CIO News. I'm Khushbu Soni, the founder of The Mainstream. Today, on our episode of Governance 360, we have Mr. Sumnesh Joshi, Deputy Director General for the Government of India. Mr. Joshi needs no introduction, but I'm going to take a few seconds to do that. Mr. Joshi is a key architect of India's digital transformation journey. As a founding member of the Aadhaar project, he played a pivotal role in implementing the biometric-based digital identity across multiple states, revolutionizing e-governance and e-service delivery. With over 25 years of experience in public policy, telecommunications, and digital innovation, Mr. Joshi's expertise lies in leveraging technology for inclusive growth, holding advanced credentials from MIT and UC Berkeley. He brings a unique blend of technical and strategic leadership to the global conversation on governance. Thank you so much, Mr. Joshi, for joining me today for this episode. Thank you, Khushbu. It's really nice to be here. Fantastic. So to begin with, I wanted to, of course, learn from you and understand. I'm sure all our viewers are going to be very excited to know, how do you see the technology industry in the last 10 years? How do you see it evolving? See, when we talk about the technology and how it is impacting our day-to-day lives, and particularly regarding the delivery of the public services or the consumption of services or receiving the benefits. If you see just a decade before, or so one can simply compare the era, how we were consuming services that time and now how we are consuming the services right now, because technology is playing a very, very important role in shaping the delivery of the services and the benefits. See, you can take one example. Suppose you want to take a mobile connection, right? Earlier you were giving proof of address, proof of identification from the set of documents. जो I can use the Hindi also, maybe for the betterment of it's a English sort of thing. तो हम क्या करते थे कि that proof of address and proof of identification का photocopy and then self attested and then we will give it to the retailer and then उसके बाद वो runner उसको लेके जाता था and उस retail outlet से main hub पे जाता था and then उसके बाद उसका verification original तो उसने कर ही लिया था. assume किया जाता है. कई बार लोग फोटोकॉपी को यूज करके मिसयूज भी करते थे. तो वो पूरा पेपर बेस्ड एक वर्क था. एंड नाउ विद द टेक्नोलॉजी, जो अभी वी विल डिस्कस फर्दर लेटर, दैट आई विल टेल यू अबाउट द हाउ इट हैज बिकम अ क्विक डिलीवरी ऑफ द मोबाइल. सो यू कैन सी दैट विद गिविंग योर आधार नंबर एंड द बायोमेट्रिक, nothing is required. So the paperless and you can take the mobile SIM. This is one example. Correct. So many services, because of the technology, we
are giving in a very fast and the convenient method. और इससे बहुत ट्रांसपेरेंसी एक सिस्टम में आ गई है, राइट? और बेनिफिट उसी को पहुंच रहा है जो इंटेंडेड बेनिफिशियरी है, राइट? एंड इतना फास्ट हो गया है, आपको प्रोडक्ट के बारे में पता करना हो, मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ नहीं हूँ, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है. तो टेक्नोलॉजी इज मेकिंग योर लाइफ इज वेरी इजी, है ना, एंड empowered, I can say. Absolutely. Yeah. So lots of things, is getting changed and has already changed in our country. Correct. Because of the technology and robust ecosystem we have created in our country. And I can say with the proud, it's the best digital ecosystem because we have 1.38 billion Aadhaar number digital identity, then 1.2 billion mobile connections and more than 1 billion bank account we have given. And communication network across the country. And the smartphone penetration. So all these things, the robust ecosystem से हमको सर्विसेज बड़ी आसानी से मिल रही है. Right. और टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ता जा रहा है. Right. So true, sir. I think last 10 years हमने देखा है वो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन एज अ ह्यूमन जब हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं एंड ऑल्सो इंडिया का ग्रोथ. आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट हैज हेल्प्ड. You have played the pivotal role in the Aadhaar journey, right? The deployment of Aadhaar identification rollout. Sir, अगर आप बता सकते हैं कि मतलब how have you seen it and what's the story behind Aadhaar? So it's really, आधार के बारे में बात करते तो बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है एंड आई एम रियली फॉर्चुनेट दैट मुझे शुरुआती दिनों में फाउंडिंग टीम में काम करने का मौका मिला और नंदन नीलेकनी एंड आर एस शर्मा, डॉक्टर पांडे एंड पूरी टीम जो वहाँ पे थी उनके साथ जब हमने काम किया तो एक तो ये कि व्हेन दिस प्रोजेक्ट वाज कंसेप्चुअलाइज्ड इन 2009 और पहला आधार 2010 में दिया गया था. तो उस टाइम पे जब हम लोगों को प्रेजेंटेशन देते थे कि ये आधार ऐसे लाइफ को चेंज करेगा और डिजिटल ट्रांसफर, लोगों को शुरू में थोड़ा समझ नहीं आता था. लोग इससे कहते हैं ना कि ठीक है एक प्रोजेक्ट है, लेकिन आफ्टर फ्यू इयर्स जब इसकी पावर लोगों ने देखी एंड वी आर आल्सो सीइंग दैट यस जो हम उस टाइम बताते थे वो अब हो रहा है, उससे भी कहीं ज्यादा हो रहा है. तो आधार का जो रोल है बेसिकली एक तो आइडेंटिटी जो है आपको पता है जरूरत है कहीं पे भी कोई भी चीज आप कहीं भी जाओ बिना आइडेंटिटी के आप कौन हैं, आप खुशबू हैं, आप सुमनेश हैं, आप पहले प्रूव करिए, है ना, तभी आपको आगे बात करेगा कि आपको सर्विस देनी है या नहीं देनी है. तो किसी भी सर्विस को लेने के लिए बेनिफिट को लेने के लिए हमें एंड डे टू डे लाइफ हर बार हमको अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं, चाहे एयरपोर्ट पे आपको एंटर होना हो, चाहे आपको ट्रेन का पास लेना हो, है ना, कहीं पे भी जाना हो, पासपोर्ट लेने जाना हो या ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाना हो, सब जगह पहले आपको बताना पड़ता है कि मैं ये हूँ, यहाँ रहता हूँ, एड्रेस और मेरी आइडेंटिटी है. तो शुरू में बहुत लोगों के पास आइडेंटिटी, लीगल आइडेंटिटी, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते थे, तो बहुत सारी सर्विसेज उनको नहीं मिल पाती. करेक्ट. एंड एक और चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि पूरे वर्ल्ड ओवर जो आइडेंटिटी प्रोजेक्ट्स हैं जनरली immigration related or security related, they created these type of projects, but the objective of the Aadhaar identity was the development initiative, कि हमें empower करना है लोगों को, right? अंत्योदया जिसे हम बोलते हैं, अंत का होता है, लास्ट माइल को हमें empower करना है ताकि बेनिफिट वहां तक पहुंच पाए, वो अपनी आइडेंटिटी को प्रूव कर पाए कि मैं हूं. तो ये इतना प्रोजेक्ट में जो सबको हमने आइडेंटिटी दे दी उससे वो एम्पावर हो गए, उनको सर्विसेज मिलने लगी. और डीडुप्लीकेशन एक और फायदा हुआ कि क्या हुआ जब सही आइडेंटिटी सबको मिल गई एंड ये बायोमेट्रिक लिंक्ड आइडेंटिटी है, आपको दो आधार नहीं मिल सकते हैं, राइट. तो जितने भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं और जो बेनिफिशियरी का डेटाबेस है, तो उसमें जब सरकार ने आधार को सीड करना चालू किया तो जो फेक और डुप्लीकेट बेनिफिशरीज थे वो उसमें से खत्म हो गए. वी आर एबल टू वीड आउट ऑल दोस. तो उससे काफी सेविंग हुई और बेनिफिट उसी को मिलने लगा जो सही बेनिफिशरी है. मैं आपको एक सबसे पहला जो इनिशिएटिव था जिसमें आधार को यूज किया वो बताना चाहूंगा. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कि बेनिफिट सीधे
बेनिफिशियरी को ही मिले। तो आधार को एज ए फाइनेंशियल एड्रेस यूज किया गया एलपीजी की सब्सिडी देने में। ओके। क्योंकि जो बैंक अकाउंट है उसमें आधार को सीड किया गया, और वो आधार फिर एक नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई है, वो एक मैपर मेंटेन करता है, उसमें वो आधार मैप हो जाता है कि दिस आधार इज लिंक्ड है किसी बैंक अकाउंट से। और एलपीजी कंपनी जो ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनी है, उन्होंने अपने डेटाबेस में आधार सीड किया जिसको सब्सिडी चाहिए। तो वो क्लीन हो गया डेटा, जिसके पास आधार है वही दे पाएगा। तो अगर पहले 2 सब्सिडी ले रहा था तो वो खत्म हो गया। एंड देन जब आधार उसमें सीड हो गया, एक यूनिफाइड डेटाबेस बन गया, और फिर जो सब्सिडी का अमाउंट है तो उसको लेना तो मार्केट रेट में ही है, सिलेंडर। ठीक है, तो जो पहले ब्लैक मार्केटिंग होती थी वो खत्म हो गई। अब मार्केट रेट में उसने लिया, और अब जो सब्सिडी का अमाउंट है वो डायरेक्ट उसके आधार लिंक्ड बैंक खाते में आ गया। ओके। तो दिस इज हाउ द डीबीटी हैज स्टार्टेड। राइट। तो जो पूरा का पूरा एक ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में क्रिएट हो गई, सारे फेक और डुप्लीकेट जो इस टाइप का बेनिफिशियरीज क्रिएट हो गए थे वो सिस्टम से हट गए, और अब बस मार्केट प्राइस पे सिलेंडर लिया और सब्सिडी उसके खाते में। करेक्ट। अच्छा, इसमें भी एक और बहुत अच्छी चीज हुई कि शुरू में रहा कि भाई गरीब है और वो कहाँ से मार्केट में मार्केट प्राइस देगा, तो एक एडवांस सब्सिडी सबको पहले दे दी गई। अच्छा। फर्स्ट। ओके। राइट। उसके बाद जब आप मार्केट रेट दे रहे हो तो ऑलरेडी सब्सिडी अमाउंट तो आपको आ चुका है। ठीक है। करेक्ट। और उसके हिसाब से आपने सिलेंडर खरीद लिया, एंड इट्स कीप ऑन रोलिंग आउट। तो ऐसे कई सारे आधार से तो जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है पूरे कंट्री में। और दूसरा, ये तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मैंने आपको बताया। एक और मैं जो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि वन नेशन वन राशन कार्ड। ओके। आई डोंट नो आप इस जमाने में रहे नहीं रहे, राशन कार्ड वाले कभी गांव में आप नहीं रहे। शुरुआती उस दौर में जब राशन कार्ड को मानकर सब्सिडी दिया जाता था, then all the ration card holders are mapped with a particular shop, ration shop. Correct. मे बी ऑडियंस में भी कुछ लोग होंगे जिन उस एरा में जिए होंगे। तो अब वो राशन कार्ड शॉप वाला जब आपको देगा फूड, उसी टाइम जाना है, अपने हिसाब से दुकान खोलता था। अब अल्टरनेट कोई नहीं था, नो वन वाज हैविंग एनी अल्टरनेटिव कि ओके ये दुकान वाला सही बिहेव नहीं कर रहा तो आई कैन गो टू द नेक्स्ट शॉपकीपर। तो काफी कुछ मतलब, और दूसरा उस टाइम में बहुत सारे राशन कार्ड वही लेके बैठता था। करेक्ट। पता नहीं लोगों के राशन कार्ड इशूड है, लेकिन उनको पता भी नहीं है कि हमारे नाम पर राशन कार्ड इशूड है, वो भी उसके पास है। है ना, वो पूरा सब्सिडाइज लेके, और फिर कोई ब्लैक मार्केटिंग उसकी होती थी उस टाइम। लेकिन जब ये आधार उसमें आ गया, राइट, तो जब डिस्ट्रीब्यूशन आधार बायोमेट्रिक बेस्ड हो गया, तो जिसका है वही जब आ रहा है ना, तो ये एक अच्छा चीज हो गया कि उसको मिल रहा है या इंश्योर हो गया। राशन कार्ड उसके पास है, लेकिन ही कैन नॉट टेक आउट बिकॉज it requires a biometric authentication, presence of beneficiary at the shop. फिर उसके बाद क्या हुआ कि इंटरऑपरेबिलिटी, कि ये जरूरी नहीं कि वो उसी शॉप से लेगा। तो एक बहुत बड़ी चीज हुई इसमें कि इंटरऑपरेबिलिटी मींस कि वन कैन टेक द राशन एनी ऑफ द शॉप, नॉट ओनली विद इन द तालुका और विद इन द डिस्ट्रिक्ट, विद इन द स्टेट, अक्रॉस कंट्री। पूरा पोर्टेबिलिटी आ गई। तो और जो इंसेंटिव है शॉपकीपर को, वो बेस्ड ऑन फुटफॉल कर दिया। करेक्ट। तो अब अगर लोग नहीं आएंगे तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। तो उसको बिहेवियर भी अपने आप अच्छा करना पड़ गया कि भाई मेरे लोग आए और सब्सिडाइज राशन ले, अगर वो सही नहीं देगा तो दे हैव ऑप्शन टू गो टू अदर शॉप, टेक राशन। सो दिस इज वन थिंग हैज हैपेंड इन द इकोसिस्टम। और जो इंटर स्टेट जो इंटरऑपरेबिलिटी आई, उसका फायदा ये हुआ कि सपोज बिहार में कोई फैमिली है एंड समवन हैज कम टू द मुंबई फॉर वर्क, तो अब शुरू में तो वो बिहार का राशन बिहार में ही मिल रहा था, यहाँ पे उसको मार्केट रेट में लेना पड़ता था। नाउ दैट वन फैमिली मेंबर कैन टेक पार्ट राशन इन मुंबई, रिमेनिंग फैमिली कैन टेक राशन इन बिहार। So ये एक बड़ा अच्छा वन नेशन वन राशन कार्ड, बिकॉज ऑफ आधार, राइट, ये जो आया, इससे बहुत लोगों को सहूलियत हुई और एम्पावरमेंट। और एक लास्ट, इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, वी गो ऑन डिस्कसिंग अबाउट आधार डिजिटल इम्पैक्ट, बट वन वेरी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट दैट द फाइनेंशियल इंक्लूजन। शुरू में लोगों के पास अकाउंट नहीं थे। अगर 10 साल पहले बात करें तो ओनली आई थिंक 30% एडल्ट्स
के पास अकाउंट्स थे। जब आधार आ गया, आइडेंटिटी सबको मिल गई, तो अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना 50 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स खोले गए अभी तक। और फाइनेंशियल सिस्टम में लोग आए। उससे क्या हुआ कि जब सबके पास बैंक अकाउंट अब हो गया, तो अभी आप जो देखते होंगे हर छोटी छोटी दुकान पे QR कोड लगा रहता है। करेक्ट। राइट। और आप 5 रुपया 10 रुपया सब पेमेंट करते हैं। अब आप सोचिए कि अगर ये QR कोड पहले आता जब बैंक अकाउंट ही नहीं थे, तो इतना सक्सेस होता क्या? नहीं होता। अब उस सब्जी जो बेच रहा है, he or she is also having a bank account and taking the money through this unified payment interface, the UPI, that QR code, वो पेमेंट उसमें आ रहा है। तो उस फाउंडेशन जो आधार का बना, उसके बेसिस पे बैंक अकाउंट्स खुले और एक एम्पावरमेंट हुआ। इसमें मुझे याद है, आई थिंक 2012 में then US Treasury Secretary came to India and visited a slum, Machimar Nagar, in Cove Parade, and we showcased him that how Aadhaar enable payment system is working on the micro ATM, that is a small handheld device where one can open the bank account, deposit the money or withdraw the money. So when we showcased him, he was amazed that this immediately bank account is open, and that next instant we are able to deposit the amount also. So this is how empowerment. And there, when he interacted with women in the slum, so they told the story that शुरू में, और आज भी आप देखेंगे वो मछलियां शाम के टाइम पे रोड पे फ्रेश मछलियों को बेचती हैं, एंड कैश पहले लेती थी, लेकिन अब वो जो कैश आ रहा है तो UPI से आ रहा है, दूसरा बैंक अकाउंट में जा रहा है। उस टाइम पे जब उन्होंने बताया था कि उस टाइम UPI नहीं आया था, लेकिन कैश जो आ रहा था वो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर पा रही थी, क्योंकि बैंक अकाउंट ओपन हो गया था। सो दे फील एज अ वुमन empowered. So this is how many stories, but yes, I can say with the proud that Aadhaar digital identity has really transformed our country and empowered the last mile. Absolutely, it definitely has. It is very inspiring, sir, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब हमें पहले के टाइम पे जब डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते थे आइडेंटिफाई करने के लिए, आई थिंक मिनिमम 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स लगते थे वेरिफिकेशन के लिए। एक डॉक्यूमेंट मिसिंग हो तो कुछ नहीं हो पाता। टुडे अगर मेरे पास आधार कार्ड है और अगर मैं आधार कार्ड से जाती हूँ कहीं पे भी, इट इज कंसिडर्ड एज द ओनली डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। सो आई थिंक इट इज डेफिनेटली द ग्रेट स्टोरी। एंड सर, आपने you've told us कि मतलब till now आधार के फर्स्ट प्रोजेक्ट से उसके बाद के भी 2-3 आपने यूज केसेस बताए। How does the future look like? See, future, is really, it's innovations we are going to create, many innovations. Yeah. People are, creating many more applications and services. Right. So अभी क्या हो गया सिस्टम के अंदर कि आधार इज अ फाउंडेशन ID. एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताना चाहूंगा, जिसके बेसिस पे काम हो रहा है, कि आधार एक फाउंडेशनल आइडेंटिटी है। आधार होने से आपको सर्विस के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं मिल गई है। दूसरा, आप सिटीजन भी नहीं है, ये रेजिडेंट को दिया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दर्शकों को भी पता होना चाहिए कि आधार रेजिडेंट को दिया जाता है, और रेजिडेंट की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इफ एनीवन हु इज रिजाइडिंग इन आवर कंट्री more than 182 days at the date of enrollment, उसको रेजिडेंट बोलते हैं। मतलब फॉरेनर्स भी ले सकते हैं, अगर 182 दिन से ज्यादा अगर वो रह लिए हैं तो उनको भी मिलेगा, OCIs को भी, ओवरसीज सिटीजन भी। तो इससे पर से कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप कार चला सकते हैं, आप ड्राइव कर सकते हैं। पासपोर्ट है तो आप बाहर ट्रेवल कर सकते हैं। पर आधार इज अ फाउंडेशन। पर नाउ हाउ इनोवेशन इज टेकिंग प्लेस, जो फ्यूचर में हम सोच रहे हैं कि इसको कोई भी सर्विस अगर आपको बनानी है, ठीक है, तो अभी हमारे पास डिजी लॉकर है, हमारे पास लैंड रिकॉर्ड का डेटा है, हमारे पास इनकम रिलेटेड डेटा है, हमारे पास एजुकेशन रिलेटेड डेटा है। द डेटा इज अवेलेबल इन डिफरेंट सर्वर्स, एंड जब आप कोई भी सर्विस बेनिफिट देते हैं तो यू रिक्वायर्स, फॉर एग्जांपल कास्ट सर्टिफिकेट निकालना है या
कहीं आपको कोई लोन लेना है तो हो सकता है स्टूडेंट के लिए अगर लोन है तो उसको ये बताना पड़ेगा कि मैं स्टूडेंट हूँ, राइट, या इनकम कम है तो उसको बताना पड़ेगा मेरी इनकम कम है। तो ये सब चीज अवेलेबल है। तो उसको आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, लोग नए नए इनोवेशन कर रहे हैं कि भाई क्यों अलग अलग जगह जाके मेरे को चारों चीज सबमिट करनी पड़े। व्हाई आई रिक्वायर टू सबमिट कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम, अगर सब कुछ अवेलेबल है मैं मेरी कंसेंट दे दूंगा। केवीएट इज गवर्नमेंट सो मोटो नहीं करे, पर यस मेरी कंसेंट है, आप मेरा डेटा ले लीजिए। अब उसमें इशू जो मेन है, हाउ आधार इज प्लेइंग रोल, सब में आपका इशू कहां था कि जिसको दे रहे हैं वो है या नहीं है। तो उसमें फर्स्ट लेवल इज आइडेंटिटी को आपको वेरीफाई करना है कि ये जो सर्विस और बेनिफिट लेने आया है या जिसने एप्लीकेशन की है वो यही आधार वाला है या नहीं है। तो उसको आप बायोमेट्रिकली ऑथ करें। करेक्ट। या समटाइम्स को ओटीपी बेस्ड पे ऑथ कर लेते हैं, ठीक है, इन पर्सन का जरूरत नहीं पड़ती कुछ सर्विसेज में, बट डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट और सर्विस तो आप उसको ऑथेंटिकेट करते हैं। एंड ऐसे ही बाकी जितने भी डेटाबेसेस है उसमें भी धीरे धीरे लोग ऑथेंटिकेट करके हम सर्विसेज दे रहे हैं और उसको आधार को सीड कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि एक एग्जांपल दूंगा कैसे इनोवेशन क्रिएट होते हैं। अभी जो रिसेंटली एक है यूनिफाइड लैंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो आरबीआई इनोवेशन हब ने क्रिएट किया है। तो उन्होंने एक पायलट किया था गुजरात में कि जो कोऑपरेटिव डेयरी फार्मर्स थे तो रोज अपना दूध डेयरी को सेल करते थे और तो उसके हिसाब से जो भी उनको अमाउंट मिलता था, पैसा मिलता था, ठीक है, उनके पास कुछ लैंड भी है तो उनका जो भी डेटा है तो अब, और उनको कभी लोन लेना तो टाइम लगता है, ठीक है। तो हमने उसके अंदर पूरा एक उन्होंने प्लेटफॉर्म बना दिया जिसमें उसने जब लोन के लिए अप्लाई कर रहा तो उसका आधार से तो उसका ऑथेंटिकेशन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद उसका जो कैश फ्लो पैटर्न है कि डेली कितना दूध वो पता लग गया, सिबिल से उसका स्कोर पता लग गया अगर है तो, है ना, एंड देन उसका अगर लैंड है तो कितनी लैंड है ना, तो सारी चीजें वो इंटीग्रेटेड उसके साथ हो गई है ना। भाषणी भी, जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेशन, हमारे यहाँ इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं एंड एवरीवन इज नॉट वेल वर्स्ड विद इंग्लिश। तो मान लो लोन हो रहा तो एग्रीमेंट भी अगर होगा तो हाउ he or she will read the agreement, तो वो भाषणी से ट्रांसलेट हो जाता है। तो वो सारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे कंपोनेंट्स को, अकाउंट एग्रीगेटर कि अगर कोई बैंक स्टेटमेंट आपको सबमिट नहीं करना है ना, आपने अपनी कंसर्न दे दी तो उसका जो भी बैंकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिस्टम में आ गया तो उसको एनालाइज करके इमीडिएटली उसका क्विक लोन सैंक्शन। करेक्ट। So this is one of the innovation. Correct. So आधार का जो यूज अब हो रहा है एंड जितना भी इकोसिस्टम में क्रिएट हो रहा है, आइडेंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एकदम से क्विकली आपने उसका ऑथेंटिकेशन किया एंड उसको सर्विस, अभी आप देखिए कई सारी सर्विसेज है, आपको अप्लाई करना होता है, आप एप्लीकेशन करिए सिंगल साइन ऑन या गवर्नमेंट में पहले आधार आप डालते हैं, आप उसमें लॉगिन कर जाते हैं, आपका ई-केवाईसी कुछ डेटा उसमें पहले मेटा डेटा बेसिक डेटा आ जाता है, देन यू कैन क्रिएट फर्दर थिंग्स। तो आधार कहीं जाने वाला नहीं है और मोर एंड मोर इनोवेशंस वी आर गोइंग टू सी आधार एज अ फाउंडेशन। Absolutely, yeah, makes sense. I think that's the foundation, and उसके बाद we could आप बिल्डिंग क्रिएट करिए, इतनी अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग क्रिएट करेंगे, correct, है ना, दूसरी चीजों को ढंग से लगाएंगे पीसेस को, आफ्टर सर्विस। Fantastic. Sir, you've been playing a pivotal role as a Ministry of the Communications for India. So, sir, in the role of communications, what does the future of communications look like? See, right now my current role in the Department of Telecom and Ministry of Communication. So, अब DOT का जो रोल है, कम्युनिकेशन का, क्या जितने भी हम बात कर रहे हैं डिजिटल इकोसिस्टम की, जब बात करते हैं कि हम सर्विसेज अब देते हैं इन डिजिटल इकोसिस्टम, व्हाट यू रिक्वायर, हो सकता है कि सब कुछ रेडी है आपका, लेकिन अगर कनेक्टिविटी ही नहीं है you can't deliver. Correct. So if we want to truly empower the entire country or last mile जो अंत्योदय की बात करते हैं, so we require number one connectivity at the remote place. Absolutely, absolutely. Right? Because उसके बिना तो communication ministry ने बहुत सारे initiative लिए हैं और ले भी रहे हैं कि how to ensure the not only connectivity, high speed connectivity at the remote area. Every village, right, should have a good connectivity, the high speed connectivity. अगर देखें तो हमारे यहाँ 1.2 बिलियन मोबाइल कनेक्शंस ऑलरेडी हैं और ऑलमोस्ट सब जगह 4G है, एंड 5G में आई कैन से विद द प्राउड दैट इंडिया
has shown the world the fastest rollout of the 5G. Right. We are having 4.6 lakh BTS as on date. So अब कुछ विलेजेस हैं अराउंड 35,000 विलेजेस, वहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, थोड़ा कम है या अनकवर्ड है, तो वहाँ पे भी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के थ्रू यूएसओ फंड के थ्रू 4G सर्विसेज देने का प्रोजेक्ट चल रहा है. तो वी आर गोइंग टू एंश्योर द 4G कनेक्टिविटी एवरीवेयर, राइट, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके बाद जो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री का काम है कि हर गांव में, बिकॉज अभी शुरू में आपने देखा होगा व्हेन एवर समवन इज गोइंग टू ओपन इंडस्ट्री, वो कैसे लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है कि अच्छा वहां पे मेरे को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, रोड अच्छी वहां पे है या नहीं है, राइट, एंड देन ओके बाकी वाटर वगैरह सब, तो नॉर्मल वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स देख के. पर नाउ द डिजिटल हाईवे इज रिक्वायर्ड, बिकॉज वो पहले देखेगा कि मेरी कनेक्टिविटी वहां है या नहीं. सब कुछ मिल गया, अगर कनेक्टिविटी नहीं तो इन टुडेज एनवायरमेंट no one can survive, what I can see. That it's a very difficult, so they all want the connectivity and that to high speed connectivity. Yeah. So in India, the optical fiber under BharatNet project, 2.14 lakh, 214,000 gram panchayats have already been connected on the fiber under BharatNet project phase 1 and phase 2. Okay. And all further remaining villages को cover करने के लिए भी BharatNet project phase 3 भी आ रहा है. So, Government of India, that is Ministry of Communication, through the USO fund, is creating this entire infrastructure that the optical fiber should be available all across country. Every village should have this connectivity. This is, some of the, things that, we are working in the communication industry. Okay, fantastic. And sir, with the rise of digitization, मतलब हमने न्यूज में भी काफी देखा है, आर्टिकल्स रिलीज हुए हैं अबाउट द साइबर फ्रॉड दैट इज हैपनिंग. सो एज रैपिडली वी आर मूविंग ऑन डिजिटल, उतना ही रैपिडली साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम इंक्रीज हो रहे हैं. सर, एनी थॉट्स ऑन दैट? ये बहुत आपने अच्छा प्रश्न किया, बिकॉज on one way, using the digital technology, we are creating convenience to the resident or the consumer. Correct. But on the other hand, yes, it's a really, people are, getting into trapped on the cyber threats, and we are, reading all these stories. So here, Ministry of Communication has taken, because see, mobile is the smart device. It's the last mile. Yeah. Right. Yeah. So this is the last mile, and the message is coming, and people are simply, clicking that link. Correct. And then maybe something has happened, or maybe the sharing of the OTP, all these things. So some of the initiatives, I will share that Ministry of Communication has taken. And one is that if anyone is, receiving the fraudulent call or the suspected call, right? So then where to report? Yeah. Because many of us are getting those type of calls. Correct. But if we get the feedback from the customer continuously, so we can work behind the scene and close those connections and find the root cause from where these calls are getting originated. Right. So prompt action can be taken. So, with my feedback, maybe I'm saving the other remaining, consumer. So there's Chakshu services. So that is Chakshu portal. So Sanchar Sathi, we call it. So one can log in on the website and report all these fraudulent suspected calls, messages that he or she is receiving. So what happened the moment it is being reported at the back end, using all AI tools and further due diligence, the actions are being taken, so we can save other consumers also, and we can stop. So slowly with the feedback, we will be able to take proper actions and stop or curb all this menace. This is one, the Chakshu portal to report. Right. Second is, initiative is because it's last mile is a mobile, and maybe as we discussed that earlier, the era of the paper based. So I don't know that someone has misused my paper-based document and taken the same. So to know that how many mobile connections are working on my name, there is a facility available on the portal. So one can log in using the OTP. Then you can find all the mobile number working on your name. And then you can flag it, okay, no, but actually I'm not using these mobile numbers. So those mobile number can, get deactivated. So this is how you clean the data. And
third is, I can say, suppose your mobile is lost, and today mobile is very precious thing. Yeah. Lots of data, and maybe sometimes many things are. So how to report this? Well, the moment I have lost this, so where to report? So again, there's a facility I can report that IMI number is there, unique number. So if I can report that, so immediately that mobile is blocked all across the ecosystem. Right. Because all TSPs, telecom service providers, are connected with the system. So I can, prevent that no one can misuse my mobile. Right. And the beauty of is that, and I can file the FIR also that I have lost the mobile. So if someone will use the same mobile, there are chances that I can get the mobile back. Okay. So this is, again this. And other facilities, because, when we buy a mobile, how do you know that this IMI number or the mobile is genuine or not? So that also you can check. Okay. That also we can check. And then sometimes you get a call, maybe you must have received a call that international calls or but with the Indian CLI. Right. So you picked up the phone that maybe someone is actually sitting outside and making the fraud calls. That's why all the cyber threats are happening, and then it's very difficult to catch them because they are actually not in India, but they pretend like they are sitting in India because CLI is coming from India. So for that also action already have been taken, but still if you are getting those type of calls, you can report the same also on the portal. And lastly, one service that because here internet is very crucial. So when I take internet connection, it has to be from trusted or authorized licensee. It's not that if someone in my colony has given the internet connection and that company is fraud. Not licensed by the DOT. So that's not correct. So know your internet service provider. That facility is also there. You can just give the PIN code, and then all the ISPs who are providing service in this PIN code can, you have the name and contact number, and then you can contact them and take the services. So these are some of the initiatives, we have under the Department of Telecom has been taken and to prevent all these cyber threats. Fantastic. Yeah, because this is a need. It's the need of the hour. So if you can also talk about the collaboration with other departments as a ministry. Yeah, so this is really with other ministry, because in the cyber crimes, what's happening? So one I have explained is and suppose some crime is committed, then there's a 1930. Correct. Number is there, so one can call that number, and then the cyber crime portal is also there. So and there's a golden hour window of 30 minutes, so one can immediately report. But here the entire ecosystem, law enforcement agency, regulators, the banking system, telecom system, ISPs, so all are everyone is using a digital technology, and and everyone wants that to be cyber proof or so Department of Telecom has created a data intelligence platform. So that many entities, 450+ entities like LEA banks, RBI banks, and telcos, Ministry of Home Affairs. So all are related ecosystem partners are onboarded on them. So the real time maybe data sharing or maybe any intelligence is received by one ecosystem partner. For example, in Department of Telecom, when we have a list of all the mobile numbers which have been deactivated, they are no longer in use. So that list is available, and the bank can make use of that list. That is there any subscriber having the same mobile number that is actually not deactivated? That is actually deactivated, but people have given. So maybe this is how with the collaboration. So maybe if any incident is happening with the bank or some input come into MSC, so maybe the ecosystem knows. So now we are just hoping that this platform will make communication amongst the stakeholder easy, and we can take the prompt action. So this platform is live? It's live. Fantastic. Okay. Great. And so how do you see technologies like AI, blockchain? The AI, blockchain, maybe Internet of Things are also coming. And 5G, I mentioned. Absolutely. But it's going to be a game changer. And we are seeing the benefit of all these
new technology. Yeah. So, for example, blockchain, maybe when I think 5, 6 years, 7 years before when the blockchain started, maybe that time people were not, thinking, okay, what blockchain is, okay, it's a distributed ledger, where the use case. But now, this blockchain is getting, momentum, Right. right? So maybe people are finding that, yes, because, in the digital environment, what you require is trust. Right. So this blockchain is helping to, enable the trust between the entities. So, and recently I heard uh, Mr. Nandan Nilikani, he coined the Finternet. Right. So basically, the asset tokenization. So every asset is tokenized, using the same crypto and blockchain sort of technology. Right. And so, one can do the transaction on that asset in a secure manner. So maybe, coming time, because in the digital space, when we are talking about the metaverse, etc., avatars, so one important thing is trust. Without trust, you can't transact and you can't go ahead. So here, the new technology will play a very important role to ensure that, yes, I'm talking with Khushbu, or I'm doing business with Khushbu in the digital space, and I have trust. Right. So that is ensured. So, and AI, of course, in day in, day out, we are seeing the use of AI in the predictive data analytics. They are studying the consumer behavior, right? So maybe sometimes you are getting the, some calls or some messages that, based on your expenditure on the credit card, so maybe they are giving the discounts also, right? Or maybe it's a continuous, so again, it's it should be, it's consent driven, or people should not misuse it, this AI part. But using the AI for the benefit of the resident, customer, or citizen, what I can say, we are continuously analyzing the data and trying to predict that, okay, what next. So there are different, use cases of AI. For example, in DOT, using the AI algorithm, so there's 1.2 billion customer application forms of the data. So all the forms have been analyzed using the AI tools, face matching and demographic data test. And then around 2.64 crore, mobile numbers were deactivated because those connections were taken in a fraudulent manner. So, because one photo has come around 250 plus places. Right. It should not be. Correct. So, using all these new technology tools continuously, we are cleaning the system. So similarly, other entities can make use of all the AI algorithm and finding that, okay, what is your pattern? Maybe sometimes you swipe your credit card or make high level transactions. Immediately you get a call. Correct. So all these things, because it's unusual. So AI thinks, okay, you are generally doing the transaction maybe 1,000 rupees, 2,000 rupees or 50,000 rupees, and all of a sudden you swipe for a 1 lakh or 2 lakh. So, all these continuous use of this technology is making you safe. Right. And now in a big way, IoT will come and turn up things. Maybe IoT, CCTV is also one of the IoT. Right. So one can use the footage of the CCTV captured. To understand again the consumer behavior, or for surveillance also, right? And to predict because I think long back I was in one of the meeting that I heard one of the company, I think Israeli company, was telling about the use of CCTV. So they are getting the footage from a park. Right. Continuously they are analyzing. But they say, okay, one boy is there in the evening time, and one person was continuously present, looking at that boy, right? And then they found that, okay, who is that person? And so they were able to, to predict that the crime is going to be happen. And before the crime will happen, something like that, so one can use the AI, but yes, it should not be misused. But lots of good cases, right? And people are using this AI for the benefit of the customer. Absolutely, yes. And IoT, that also I want to tell that, for example, now environmental sensors. So you can know that, okay, you can take the action if the pollution level is going to be increased, or right, and maybe the green financing also, you can have a real-time monitoring also, and maybe for the agriculture sector, you can measure the soil, moisturization
Correct. And if any disease is there, right, Yeah. using the drone and capture the image, and you can find out, so you can further which pesticide is to be used. So all these Yes. things, the quality. So the use of IoT is vast. Absolutely. And in the industry also, right, for the quality check also. Correct. Right, because earlier I used to be in the textile industry when I started my career. Okay. So suppose cloth is in the final, so it's a quality check. It's a manual quality check. Correct. Sometimes, or maybe some machine is making something, maybe because of one thread. By the time we know, say hundreds of meter, cloth has been prepared. Absolutely. So, but now with all the sensors, immediately you can stop, and the wastage is reduced. Correct. And good quality you can ensure. So IoT is going to be, it will, this sensor can communicate directly with 5G technology. Yeah. Right. And then, whatever data is coming, immediately we can take the action. Correct. Health sector, education sector, transport sector, all the traffic planning, etc. So, and number of uses. We keep on, whether health or transport or the education or the agriculture, right, or industry. Right. So everywhere the surveillance, right, and the traffic. Yeah. So one can use the IoT. IoT, absolutely. So new technology, yes, is going to change. Yeah, game changer. Absolutely. And so I think with that also, when we see so many use cases of AI, of IoT, there is so much of risk of the misuse that you mentioned, right? It can, like, there are bad actors who will, misuse the technology. So parallelly, I think there's a lot of focus on the cyber security as well for the nation, for the government, for India's critical infrastructure, all of that, right? So if you can talk about the government policies, how has that shaped? Yeah, so see, government policies at every ministry and at the top level, many policies are, already, decisions have been taken and many more will come. Right. So see, ultimate objective is what I can say. We all want that India should be a Viksit Bharat by 2047. Okay. $30 trillion economy. Absolutely. Right? And we are really going ahead, and the kind of digitization we have and the participation of everyone in this ecosystem to boost our digital economy. But of course, you rightly pointed out that, one is that with respect to the cyber related thing or many IoT things will come, so how to, because lots of data will get generated. Correct. And people can misuse, because people can collect the data and then misuse the data. Correct. So now government has already passed the Digital Personal Data Protection Act, DPDP Act. So that safeguards the interest of all the resident, and because we can discuss a lot maybe separately on the DPDP, but the crux is that without my consent they cannot use my data. Right. So, or maybe I have given my data for X purpose, so they cannot use for any other purpose unless until I will give my consent. So consent driven architecture. Right. Right. And this is very important, and act has been passed, and anytime government may announce that it's going to be implemented. So when we are engaging with all the ecosystem, we keep telling them, please be ready, revisit your architecture, and it should be in compliance with the DPDP Act. So data should be secure. So we have a legal protection with respect to the my data. And of course, the other initiative that I told that Ministry of Communications taken to safeguard, the new Telecom Act, again further how to create the infrastructure. So the right of way rules have been notified. So easy, rolled out of the telecom infrastructure. So all the relativism has gone out. So many initiatives are being taken at the policy level also to ensure the safe, convenient delivery of the services, and one should feel that yes, in the digital ecosystem, I am okay. I can share the data, and my data will remain protected. These are some of the things from Telecommunication Act and the DPDP Act. Absolutely. So it has been wonderful conversing with you and wonderful insights. I have one last question, sir. How do you see India's stand at the global level? Yes, global level now everyone is talking about India.
Even recently, I spoke at the conference that is held by the International Organization for Migration, United Nations, at Bangkok. So it's on the cross-border, and identity management. So when I spoke and when I interacted with many people, so the kind of system we are using, so everyone is interested in the global, and all are aware about that. Yes, India has done in the identity a tremendous thing, and then following the identity, people are also appreciating the digital public good infrastructure that we have created, because DPI, something that we have given to the world. Right. This concept of the DPI that create the platforms which can be used by anyone in the ecosystem. Right. And I think when last G20 summit, India was anchoring under the presidency of India. So the theme was on saying the DPI, and many countries are now emulating this concept and creating the digital public infrastructure, and continuous engagement with the India also, that how India can help. And there are many agencies in India also, they are helping other countries also in creation of the DPI. This is something is not available in other countries. Correct. So at the global level, on the digital, from the digital perspective or digital public infrastructure, identity, and now this Make in India initiatives. Earlier, 10 years before, 98% we were importing, but now 99.2%, we are making in India, and now we are exporting also. So all these things are happening at the global level, and we are very sure that using this all digital technology, digital prowess, we are soon going to be Viksit Bharat by 2047. Fantastic. So this was wonderful conversation. Thank you for joining us on the Mainstream and sharing all of these information for our viewers. Thank you, Khushbu. Thank you. Thank you.